अब हम उड़ान से 1 मिनट 18 सेकंड की दूरी पर। दर्शकों का रोमांच यहाँ देखते ही बनता है। All stations, stand by for the timer. T-1 minute. ചരിത്ര ദൗത്യത്തിനൊരുങ്ങിയ ISRO ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ISROയുടെ 100ാം ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും. രാവിലെ 6:23 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ 2ാം ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നും നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹവുമായി GSLV റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരും. ഇനി നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരാൻ വേണ്ടി 100ാം ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ISROയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ISRO. ചരിത്ര ദൗത്യത്തിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. 100ാമത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം ഉടൻ തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കായാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ISROയുടെ 100ാം റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം. ISRO ചെയർമാനായി വി നാരായണൻ ചുമതല ഏറ്റതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 4, 3, 2, 1, L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent lift off of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य, सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का। चारों L40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। An eastward mission launched at 106 degrees azimuth. Plus 40 seconds. GSLV core S-139 and the 4 L-40 strap-ons thrusting simultaneously. Cumulative thrust is 7,535 kilonewtons. प्रथम चरण में कोर बूस्टर है जो कि ठोस नोदक पर आधारित है। कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल लगभग 111 सेकंड का है। इसके पश्चात भी L40 जो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स हैं उनका प्रज्वलन लगभग 50 सेकंड और आगे चलेगा। इस तरह लगभग 150 सेकंड्स पर प्रथम चरण का प्रज्वलन काल समाप्त होगा। Action time for the core solid motor is 112 seconds and that of the strap-ons is 149 seconds. HTPB based propellant in S-139 and L-40s are powered by turbo pump fed Vikas engine based on earth storable propellant. Shar ground station acquiring the trajectory data. S-139 stage ban out. कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है। Plus 2 minutes. स्ट्रैप-ऑन बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। इस दौरान यह लगभग 3000 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Normal. कुछ ही क्षणों में L40 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स बंद हो जाएंगे और GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। L40 stages thrust cut off. Second stage ignited. First stage separated. Interstage separated. Closed loop guidance initiated. Current altitude is 81 kilometers. We are 169 seconds into the flight. Second stage performance normal. जी हाँ, जैसा आपने सुना, प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह लगभग 141 सेकंड का प्रज्वलन काल है। इस दौरान यह लगभग 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Also known as the GL40HT, the second stage operates on UH-25 and N204. High thrust Vikas engine develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time of GS2 for the present mission is 141 seconds.
Shar and Port Blair stations currently tracking. द्वितीय चरण का प्रज्वलन जारी है। इसमें हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल होता है। Payload fairing separated. Shielding of the spacecraft from atmosphere is no longer necessary. The current altitude is more than Second 100 stage kilometers. performance The normal. payload fairing has been separated. Shar and Port Blair ground stations continue to track. पूर्व निर्धारित तरीके से 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने के पश्चात ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाता है। Trio stage is authorized. जहाँ द्वितीय चरण का कार्यकाल अब समाप्त होने को है। तृतीय चरण जो कि क्रायो अपर स्टेज है उसे अनुमोदित कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण Second stage thrust cutoff. Second stage separated. Trio stage ignition commanded. Plus 5 minutes. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Trio stage ignition confirmed. Here's a piece of good news. The third stage, the cryogenic upper stage, has commenced its operation. जी हाँ, एक बहुत जटिल इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन और इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का पल होता है यहाँ वैज्ञानिकों के लिए। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है। यह लगभग 840 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यह 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। We are 345 seconds into the flight. Current altitude is 143 kilometers. सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए और यान उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। The cryogenic upper stage with 15 tons of propellant loading is currently operating. Liquid hydrogen as the fuel and liquid oxygen as the oxidizer. Burn time of the stage is Trio 14 stage minutes for this performance mission. normal. The speciality of the stage ISRO-യുടെ is that ചരിത്ര ദൗത്യം specific impulse is 400. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ISRO-യുടെ 100ാം ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. 6:23 കൃത്യം 6:23 ഇപ്പോൾ GSLV F-15 എന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. NVS-01 എന്ന പേടകം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ISRO ചെയർമാനായി V നാരായണൻ ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിക്ഷേപണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്.